Hello students, good morning. Sorry, due to network issue, in half only we have to end the session of a computer. We have conducted something, but there was a lot of network issue. That's why I'm sending you the recording of a subject. Okay, so let's start with our first chapter. The first chapter from your syllabus of computer is computer networking. Computer networking, first thing, what is meant by computer networking? The question I have asked to you during lecture, and someone have answered me of it, that what is a computer network. So computer network means what? Sending the information, sending the data. When the computers are interconnected with each other, when the computers are connected in a one network through any of the cable, any of the system, any of the device, that type of network is called as computer network. So I hope you understood what is meant by a computer network. Computer network means the sharing of resources between different system, in between different system, through different use of different devices, use of different cables, use of different systems. When they are interconnected with each other, that is called as a computer network. So what points we are going to learn in this chapter? So in this chapter we are going to learn computer networking, need of computer networking, advantages of computer network, network terminologies, components required for a network, types of network, topology, network architecture, wireless networking technology, and protocol. So let's start with a computer network. What is meant by a computer network? Just now I am explaining you what is meant by a computer network. Computer network means it's nothing but a network in which the devices are interconnected. Interconnected means here in an image you can see that there is a device, that here, see, there is a, this one is a device, here there are many computers which are connected to each other through a system. Okay, there is a printer, there is a CPU, and there are many computers which are connected to each other. This type form of network, it can be called as a computer network. Or I can give you the example of our computer lab, in which the computers are connected with each other. There are only 4 CPU in our computer lab, and the computers are interconnected to each other over there. So this type of network is called as a computer network. Okay, here what is there? The computer and other peripheral devices. Peripheral devices mean the devices which are externally connected to the computer, like printer we can connect externally to the computer, pen drive we can connect externally to the computer, then keyboard, mouse we can connect externally to the computer. So these are called as a peripheral devices. Means a when many computers and the peripheral devices, when they are connected together through any of the cable or any of the device, that type of network is called as a computer network. Now, what things are required to connect these computers within a network? So there are different kinds of computer networks, or there are different kinds of cables, different kinds of networking devices to which we can connect our computer in a network. Like there is a cable in our computer lab, there is a cable, then there is a hub, switch, NIC card, modem you might be knowing, router. So these all are the devices through which, by using some of these devices, or by using these devices, we can connect our computer in a network. So by step we will move further, and we will study that what is cable, hub, switch, NIC card, modem, and a router. It is a step by step process. Okay, next. So I hope you understood computer network. Next, the next point over here that we have to revise is need for computer network. Why we require a computer network? What is the need? See, computer network is most oftenly or most probably used for sharing resources. Sharing resources means what? Now if you want to send a file, like I have to send a video to you guys, so which network I am using? I am sharing these resources over where? I am sharing these resources over WhatsApp. Okay, now how can I send this video to you guys on a WhatsApp? By using a internet itself tells that it is connected within a network. It is a network, okay, through which the devices are connected.
So I'm sharing my resources with you guys through any of the social media device, any of the social media application. I'm sharing my file, I'm sharing my messages with you with the help of a device, with the help of a application that is installed in my mobile, that is installed in your mobile, through which we can share our files. Okay, so the first need of computer network is to share resources. Then what kind of resources can be shared over network, or yes, what kind of resource can be shared over network? We can share files over network if we are connected through internet. Then hardware devices, printers, scanner, these can also be shared, like CPU. If you remember our computer lab, there are only 4 CPU and there are 22 computers connected to them. Okay, so one CPU is what one CPU is doing. The one CPU, there are 4 computers which are interconnected to the single CPU. There are 4 computers which are interconnect 4 or 5 computers which are interconnected, which are at a time connected to a single CPU. Means there is hardware sharing. मीन्स 5 कंप्यूटर्स, 5 कंप्यूटर है और उनके लिए कितना सीपीयू है? एक ही सीपीयू है. मीन्स देयर इज अ शेयरिंग ऑफ अ डिवाइस. जिस 5 कंप्यूटर मिलके कौन सा डिवाइस शेयर करे? दे आर शेयरिंग अ सीपीयू. ओके, likewise printer, scanner, these can all these device also we can connect to the computer by using a Wi-Fi technology. Wi-Fi technology helps us to share resources among each other, the hardware resources. Then next one is communication. Now first thing is we require computer network for resource sharing. रिसोर्स शेयरिंग मतलब फाइल, हार्डवेयर डिवाइसेस, देन टेक्स्ट मैसेज, वो सब आता है रिसोर्स शेयरिंग में. द सेकेंड वे इज कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट वी डू if I want to talk with you, if we want to have a lecture, what we do, we just connect each other through a Zoom app daily in the morning, and our lecture, our session gets started. Okay, so we what we are doing, we are doing this thing through a network, that is the internet. Means we are communicating with each other. So this one is the one thing. If you want to have a communication, we can communicate with each other through a network. If you want to send a voice message, video conferencing, like on WhatsApp, you can have a video call. Instant messaging, we are sending messages to each other through a network, through a from one mobile, from one device to the other device. Okay, that can be done in a network. We are sending emails, and there are many things which through which we can do communication with each other over telegram, text messaging, and many more things are there. So for what the need, so the need of a computer is for research sharing. Means sharing different data, PDF files, word files, links, and videos, audios, and many more things. And for communication purpose, we are using computer network. Now, so I hope here you understood what is a computer network and what is need of a computer network. Next one is advantages of a computer network. क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट कर दिए, या डिवाइस को हमने शेयर कर लिया, कम इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट कर ली, तो हमें सारी चीज़ें मैनेज करने को ईजी हो गई. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इट? लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप. सो the information can be easily shared by the people. इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? ईजिली हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. इफ़ वी आर इन अ नेटवर्क, लाइक इफ़ वी आर इन अ इंटरनेट नेटवर्किंग, देन वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर डिवाइस थ्रू different media application. Then it helps in reducing the cost of hardware. कोई हार्डवेयर लग रहा है क्या? जैसे अगर मुझे क्लास में आपको कोई मैसेज देना है, तो आई हैव टू यूज़ अ चॉक. इफ़ देयर इज़ अ नोटिस इन अ क्लासरूम, देन आई हैव टू टेल यू व्हाट इज़ देयर इन अ नोटिस, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन. आई हैव टू राइट इट ऑन अ बोर्ड. इफ आई हैव टू गिव यू द टाइम टेबल, आई हैव टू राइट इट ऑन अ बोर्ड. ओके, मीन्स व्हाट here it is like I have to use a chalk, or I have to use a duster, I have to use a blackboard. So there are lot of things which I have to use in general, and it requires a cost. chalk वो खरीदने को भी पैसे लगते हैं, डस्टर उसको भी पैसे लगते हैं. तो क्या है कि चीज़ें लोगे तो वो महंगी गिरेगी. बट व्हाट इफ
you are using a network to share the device, to share the information. Like mobile is a hardware device, I am sharing information with you guys over this mobile or through this mobile. Okay, then what is there? Do आई रिक्वायर एनी कॉस्ट? नो, आई डोंट रिक्वायर अ कॉस्ट. मुझे पैसे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे. सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ अ हार्डवेयर. हार्डवेयर का कॉस्ट क्या हो रहा है इसके वजह से कम हो रहा है. मतलब हमें चीज़ें लग रही है क्या ज़्यादा यूज़ करने के लिए? नहीं, हम जस्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे वी आर सेंडिंग आवर मैसेज एंड the thing is done. Okay, so the if our devices are connecting within a network, so it helps us in reducing the cost of a hardware. मतलब चीज़ों का दाम, हमें चीज़ें इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करते and our work becomes easier. Next is store information on one centralized location. एक ही जगह स्टोर होती है. अभी आपके मोबाइल में अगर हमने कोई फाइल भेजी तो वो मोबाइल में ही होगी ना. बट आपको अगर हमने होमवर्क दिया, किसी ने कैलेंडर नहीं लाया है तो उसने कहीं तो भी रफ पेज पे या रफ बुक में या कोई और नोटबुक में होमवर्क लिख दिया, तो क्या होगा? आप क्या बोल सकते हो? मैम आई डोंट नो, आई हैव रिटन इट इन माई नोटबुक बट माई नोटबुक गॉट लॉस्ट. तो इधर उधर होने के चांसेस होते हैं. बट इफ़ यू आर यूजिंग एनी ऑफ द डिवाइस, ओके, तो क्या होगा? वो उस डिवाइस के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. जैसे अगर हमने नोट्स भेजे आप लोगों को तो नोट्स आपके मोबाइल में ही स्टोर होंगे. कहीं और जाएंगे क्या? नहीं, कहीं नहीं जाने वाले. सो स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन सेंट्रलाइज लोकेशन. एक ही जगह होगी. सारे सब्जेक्ट के नोट्स के PDF आपको मिल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है. वो कहाँ मिल रहा है? सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के लिंक आपको मिल रहे हैं. वो कहाँ मिल रहे हैं? ऑन अ सिंगल मोबाइल, ऑन अ सिंगल डिवाइस विच यू आर रजिस्टर्ड टूवर्ड अस फॉर लेक्चर. Then, reliability implies backing up of information. If a system crashes, then the information is accessible on another workstation for future use. अभी अगर आपने आपके मोबाइल का बैकअप करके रखा है, मोबाइल अगर आपका करप्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है. लास्ट ईयर आई टॉट यू अबाउट वायरसेस. वायरस क्या होता है ये मैंने सीखा है. ओके, तो अगर सपोज आपकी सिस्टम क्रैश हो गई, क्या हो गई? आपकी सिस्टम क्रैश हो गई और आपको क्या करना पड़ा? आपको रीफॉर्मेट करना पड़ा आपका सिस्टम, आपका डिवाइस. रीफॉर्मेट मतलब आपको OS फिर से इंस्टॉल करना पड़ा. तो पुराना डेटा जो कंप्यूटर में था या जो मोबाइल में था उसका हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? तो उसका अगर आपने बैकअप करके रखा है, आपको पता होगा बैकअप क्या होता है. मोबाइल में हर रोज़ बैकअप आप करते होंगे, फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का, हर एक चीज़ का बैकअप लेते होंगे. सो क्या होता है अगर आपकी सिस्टम किसी वजह से या वायरस की वजह से क्रैश हो गई, एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू? यू कैन take backup of your data through any other device or any other device in your another hardware system. आप क्या कर सकते हो? चीज़ों का बैकअप ले सकते हो कोई और मोबाइल के अंदर. अगर आपने वो सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर डाल के रखी है, तो आपने कोई और जैसे पेन ड्राइव में डाल के रखी है, तो आपके पास वो बैकअप हो गया. कि आपको लगता है आपकी सिस्टम क्रैश हो जाएगी, तो क्या करते हैं? उसके पहले पेन ड्राइव में डेटा लेके रखते हैं. सो यू कैन यूज़ योर इंफॉर्मेशन or you can back up your data with the help of any hardware device, or you can put it on a network. Okay, then reduction in installation cost. अगर अभी एक CPU है और 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली वो सारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा. तो क्या होगा? हमें उसके वजह से कॉस्ट कम लगेगा, पैसे कम लगेंगे. तो जो भी इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आता है, जैसे कि एप्लीकेशन है, मुझे जूम ऐप अगर मैंने कंप्यूटर लैब के अंदर एक कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया तो बाकी सारे कंप्यूटर में आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड अ CPU एंड दे आर कनेक्टेड इन अ LAN नेटवर्क. ओके, तो इसका क्या होगा? कॉस्ट, जो इंस्टॉलेशन का, जो चीज़ों की इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ओके, देन यूज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू सिक्योर डेटा. और authentication process to secure data we have learned in a last year in some of the chapter कि आप क्या करो अगर आपका डेटा आपको चाहिए कि हैक ना हो जाए या कुछ ना हो जाए. ऑलवेज कीप अ पासवर्ड ऑन योर कंप्यूटर. क्या करो? हमेशा एक पासवर्ड आपके कंप्यूटर को लगा के रखो. ओके, सो यूज़र ऑथेंटिकेट प्रोसेस टू सिक्योर डेटा. ऑलवेज यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. ऑलवेज कीप योर सिस्टम सिक्योर. ऑलवेज check your system. Always take care of your system so that your data will be secured. Secured मतलब वो हैक नहीं करेगा कोई, और वो प्रॉपर आपका डेटा सारा जहाँ है वही रहेगा. ओके, so these all are the advantages of a computer network that we have seen in this chapter.
So up till now in this chapter we have seen what is computer network, need for computer network, advantages of a computer network, and remaining points, that is network terminology, components required for a network, types of network, topology, network architecture, wireless networking technology, and protocol. These all points we will see in next lecture in next week. Okay guys, so today's homework, today's homework is whatever I have taught you now through this video. What you have to do, you have to take out the notes of the points whatever I have taught you, and you have to note down it in your homework book. You have to write it in your homework book, make separate homework notebook for a computer, and you have to write whatever I taught you today. You have to write it in your own language in your homework book. Make a habit to take out notes on a regular basis. Everyone have to do it. The marks are, they are having external marks, your homework is having marks as well. Okay, so whatever I have taught you today, you have to take out the notes of those points and write down it in homework one time. Okay, guys, I am ending this session over here. Study well, and whatever I taught you, just go through it properly and understand it properly. In next section we will cover further points. Okay.